एवरीवन, वेलकम टू स्पेक्ट्रा एडुकेशन। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशंस के बारे में। ऑलरेडी थियोरेटिकल जितने सारे डिस्कशन चाहिए फॉर इंजीनियरिंग कोर्स के लिए वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो आज से स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन। तो चलो फर्स्ट प्रॉब्लम्स क्या है, बहुत ही इजी टाइप प्रॉब्लम है ये। तो एक बार पढ़ लेते हैं कि प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 2 ग्राम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन which is indicated by this equation। तो क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन से, इट इज कंटिन्यूइंग इट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2 ग्राम and it follows the equation y is equal to 10 sin pi by 3 t plus pi by 15, and it's asked that what is the amplitude, angular velocity and so on। तो फॉर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम बहुत ही आसान है। पहले क्या काम करो कि जो जनरल सॉल्यूशन है ना, जनरल सॉल्यूशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट डाउन इट्स इक्वेशन। सो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस phi। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो दिस इज द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो अब इन दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे, और बाय कंपेयरिंग वी कैन फाइंड आउट ऑल दिस आंसर। सो फर्स्ट इट इज आस्क्ड व्हाट इज द एम्पलीट्यूड। सो व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, देखो यहाँ पे a और यहाँ पे 10, तो इट इज अगेन इट इज रिटन इन यूनिट सेंटीमीटर। सो a इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। b, what is the angular velocity? So in here angular velocity for simple, remember that once for simple harmonic motion, angular velocity and angular frequency both are same, which is omega. Okay, and this is true only for simple harmonic motion. So omega, angular velocity, is equal to pi by 3. When it is velocity, then its unit should be radian per second. C में क्या पूछ रहे हैं, what is the time period t? We all know that time period t is equal to 2 pi by omega. So it is 2 pi, omega is equal to pi by 3, and unit should be second. So it is basically 6 seconds. Number D, what is the maximum and minimum velocity and also acceleration? So velocity का expression क्या है, velocity is equal to omega root over a square minus y square. This is the general expression for velocity for a simple harmonic oscillator. आप पूछ रहे हैं कि v max, देखो ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम कब होगा, जब ये y is equal to 0. So at y is equal to 0, v becomes v maximum, maximum velocity, and it is omega root over of a square. So basically it is omega a, and you all know that what is the omega. Omega is given, it is pi by 3. So this is pi by 3, and what is the a is equal to 10. So this is basically 10 pi by 3 centimeter per second. And it is asked about the minimum. So when this velocity will be minimum, so when or at y is equal to a, this v is equal to v minimum, and which is nothing but 0. It is also asked about the acceleration, maximum and minimum acceleration. देखो acceleration क्या है, acceleration a is equal to omega square y. I am talking about the magnitude only. So what is the maximum, a max is equal to omega square a. So this is when y is equal to a, then acceleration will be maximum, it is omega square a. Put it values and you will find the acceleration. Minimum acceleration, a minimum, y is equal to 0. So this is a minimum is also 0. Now e, what is asked, what is the epoch? So epoch means initial phase, that means phi. So what is the phi here, phi is equal to pi by 15. And last f, it is the asked about its kinetic and potential energy, only expression. So kinetic energy ek, we all know that it is half m omega square a square minus y square.
देखो अगर भूल भी गए कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, बेसिकली हाफ एम वी स्क्वायर, वी का याद रखो, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सो हाफ एम वी स्क्वायर मींस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर a square minus y square. What is the potential energy? Potential energy is equal to half m, only y square will be there. So that's all for the first problem. अब आते हैं कि सेकेंड प्रॉब्लम. अब पूछ रहे हैं कि राइट एन इक्वेशन ऑफ मोशन. लास्ट प्रॉब्लम में इक्वेशन ऑफ मोशन वाज गिवन, बस इस प्रॉब्लम में यू हैव टू मेक एन इक्वेशन ऑफ मोशन. क्या क्या दिया है? फॉर द डिस्प्लेसमेंट at time t of a particle executing simple harmonic motion. एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशंस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, राइट एंड लेफ्ट हो रहा है फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, whose amplitude is given, that is 0.03 मीटर. एंड और क्या दिया हुआ है? इनिशियल फेज, सो इनिशियल फेज phi is equal to pi is given, and it's also time period t is equal to 0.25 second is given. It is asked about to the equation of motion. So general equation of motion, you all know that it is a sin omega t plus phi. So a is given, phi is given, so first we have to find out what is the omega. We know that t is equal to 2 pi by omega, so therefore omega is equal to 2 pi by t. So 2 pi by t अगर यूज करोगे, so 2 pi divided by 0.25, it will be in radian per second. So 2 pi by 25 into 100, so we can divide its 4, so it is 8 pi radian per second. So now everything is with our hand. So y, the equation of motion, is equal to 0.03, and it is sorry, there will be sign, there will be y 0.03 sin that omega is equal to 8 pi t as it is plus pi. So it is just like, देखो कि we all know that sin of pi plus theta is equal to minus sin theta, है ना? तो ये देखो ये थीटा की तरह है, so we can simplify it more, that is y is equal to minus 0.03 sin 8 pi. So this is the equation of motion for this particle. Now problem number 3. A particle executing simple harmonic motion performs 100 oscillations per minute. तो ये पार्टिकल है, ये अपना मीन पोजीशन से सिंपल हार्मोनिक मोशंस एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और इनका जो ऑसिलेशन इज 100 पर मिनट. 100 पर मिनट मतलब एक सेकेंड में ये 100 टाइम्स 100 फुल ऑसिलेशंस कंप्लीट कर रहा है. ठीक है, सो मतलब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, लीनियर फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 100 पर मिनट. बेसिकली फ्रीक्वेंसी सेकेंड में लिखते हैं, सो इट इज 100 divided by 60, so per second, or simply it is 100 by 60 hertz. Okay, so frequency is given, और क्या क्या दिया हुआ है? So its maximum speed is 20 meter per second. So v max is equal to, we all know that it is omega a, which is 20 meter per second. Calculate its maximum acceleration. So acceleration a max, we all know that it is omega square a, और by simplifying we can write it is omega into omega a. क्योंकि हम लोगों ने, क्योंकि omega a का value already given, so I have just treated omega square as omega into omega. Okay, so what is omega now? Omega we can find out from this linear frequency, because we have the relation between the angular frequency omega and linear frequency as omega is equal to twice pi f. So we will use here, so it is twice pi f into omega a. Now we will use, it is twice pi, it is f means 100 by 60, and omega a is 20 meter per second, so it is 20. So unit should be meter per second square, because everything is in SI unit. So it becomes, so let's say this is 3, so it is 200 pi by 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तुम चाहते हो तो और भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो. प्रॉब्लम नंबर 4. ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज अ टाइम पीरियड ऑफ 0.002 सेकेंड. तो एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के लिए टाइम पीरियड इज गिवन 0.02 सेकेंड, and
एन एम्पलीट्यूड ऑफ 0.1 मीटर. सो इट्स का एम्पलीट्यूड भी दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 0.1 मीटर. फाइंड इट्स एक्सीलरेशन when it is at 0.04 मीटर अवे फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. तो देखो कि ये जो ऑसिलेटर है ना, तो दिस इज द मीन पोजीशन. सो दिस इज द मीन पोजीशन एंड मीन पोजीशन से जो एम्पलीट्यूड है बोथ साइड में दिखा सकते हो. एम्पलीट्यूड जो है दिस इज ए इज गिवन at any time when it is 0.04 मीटर अवे फ्रॉम इट मीन पोजीशन. सो मीन पोजीशन से मान लो कि दिए है 0.04 मीटर. दैट मीन्स बेसिकली y is given. So y is equal to 0.04 मीटर. पूछ रहे कि एक्सीलरेशन क्या है. सो एक्सीलरेशन a is equal to, we all know that it is omega square y. It is not maximum acceleration, it is the acceleration at any time t when displacement is y. So omega, how could we find out that omega? Omega is equal to basically 2 pi by t. इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो. 2 pi by t means 0.002 radian per second. This is radian. Always write down the unit. So 2 pi by 2 into 10 to the power 3, right? So these two is cancel. So 10 to the power 3 pi radian per second. This is the omega. So basically a becomes omega square, that is 10 to the power 3 pi whole square into y, that is 0.04. So a, it is in SI unit, these are all SI unit, so it is basically meter per, so unit should be meter per second square. So इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना, you will find the answer. और भी पूछे कि find its maximum velocity. So maximum velocity you all know that V max is equal to basically omega a, its amplitude. So omega we have found out it is 10 to the power 3 pi and a is 0.1. So unit should be velocity, so it is meter per second. Now the problem number 5, very interesting and important problem. A 5 kg object is suspended from a vertical spring. तो देखो कि ये एक स्प्रिंग है, जब कोई लोड नहीं था, मान लो कि ये उनका विदाउट लोड जो लेंथ है. अब ड्यू टू द 5 kg लोड देयर विल बी एन एक्सटेंशन, और ये है हमारा 5 kg लोड. तो एक्सटेंशन कितना है? सो दिस इज द एक्सटेंशन, लेट्स से दिस इज द y, और ये कितना लोड है? दिस इज 5 kg, और 5 ड्यू टू द 5 kg लोड द ग्रेविटेशनल फोर्स इज along this direction. So F is equal to it is 5 mg, so 5g. But in this position it is in equilibrium. किस पोजीशन में? इट इज इन इक्विलिब्रियम, स्टेबल कंडीशन में इस पोजीशन में, क्योंकि सिर्फ ये मास इज सस्पेंडेड है. तो अगर ये नीचे 5g अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड, सो देन above this direction there will be a force which is ky, because we all know that if k is the spring constant, so the restoring force we can see, although this is not the restoring force, this is the force due to the spring. So spring constant into the extension. So in equilibrium these two forces are equal. So this is basically 5g. इसको ऐसे लिख के रखो, पता नहीं कब कम पे आ जाए. आप क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि नाउ, और ये y is given, y is equal to 0.20 meter. That much stretches has been done for this spring. Now the second object of mass 1.5 kg is suspended from the same spring. Find the time period of vertical oscillation. आप बोल रहे हैं कि भाई इसको रिमूव कर रहे हैं, इस पोजीशन में ये एक्सटेंडेड कंडीशन में ही है. अब इसको हटा के वी आर गिविंग द लेस अमाउंट ऑफ मास which is about 1.5 kg. ये क्या हो गया? इसको इरेज कर लेते हैं. So it is about 1.5 kg. अब देखो कि यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में तो एक फोर्स है, सो ये फोर्स उसको वापस अपना इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेके जाने की कोशिश करेंगे. इस वजह से देयर विल बी ए सिंपल हार्मोनिक मोशन. And what is the time period of that simple harmonic motion? T is equal to 2 pi by omega.
and you all know that omega is equal to root over k by m from simple harmonic motion. So time period t is equal to 2 pi root over m by k. Now mass is given, कौन सा mass, डोंट बी कंफ्यूज, मास शुड बी 1.5 kg, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे 5 kg is only suspended, so don't put m is equal to 5 kg, so mass here is equal to 1.5 kg. What is the k, देखो k is the spring constant, सेम स्प्रिंग है यहाँ पे, जो स्प्रिंग कांस्टेंट वहां पे भी स्प्रिंग कांस्टेंट, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट इज द मटेरियल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट की एक्सप्रेशन वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम हियर, सो k इज इक्वल टू 5g by y। तो स्प्रिंग कांस्टेंट निकालो, 5 into 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 0.20 मीटर, तो अल्टीमेटली इट विल बी न्यूटन पर मीटर। So this is the spring constant k. So now t is equal to 2 pi, mass is 1.5 divided by k, k means इसको ऊपर चला जाएगा, this is 0.20 divided by 5 into 9.8 and answer should be in second. तो इसको simplify करो and find out the result. कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अब देखो कि और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, वी विल परफॉर्म इन लाइव क्लास। अगर इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्यूशन सीखना चाहते हो, फुल कोर्स, इफ यू वांट टू गेट द फुल कोर्स फॉर इंजीनियरिंग फिजिक्स, you can join the Spectraeducation, you can contact through this number, you can write email this number. The course fees is very little, so with this course you can prepare yourself for your end semester exam or any exam, and you can also prepare yourself if you are weak in physics, your physics will be very strong. तो ये ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे प्रॉब्लम शायद मैं इस लाइव क्लासेस में इसे डिस्कस करेंगे, ये सब प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे लाइव क्लासेस में, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस अदर प्रॉब्लम्स लाइव क्लासेस also. Now I'm ending this one. Okay, bye.